We'll wait for a few more minutes, guys. Let's see how many of them are joining. Sorry for the delay. I was stuck with an office meeting. Today we'll have only one session. I understand it's too late. I hope Okay, both sure. Isaac bhai, Johi, I hope both of you have installed Azure Explorer, Storage Explorer. Yes, Sohail. In fact, I'm sorry, मैं कल बोल नहीं पाई because of the meeting that occurred. मैंने पहले से install कर लिया था वो. Okay, great. So we'll practice that today. Let's see how many people are joining. So were you able to give access and access something using a key when you had? नहीं, actually what I did, I thought कि जो already storage account आपने create किया है वहाँ पे जाके I will be able to, मैंने उतना ज़्यादा उसमें वो नहीं किया, practice नहीं किया है, तो मुझे समझा नहीं कैसे करना है उसके बाद में. No worries. We'll do it today. Okay. So let's wait for a minute or so, and then we'll start. Srishti, were you able to install Azure Storage Explorer? Yeah, I have already installed the storage. Okay. So I think guys आज ज़्यादा लोग नहीं आएंगे because it's been late already, काफी late हो गया. And we'll have only one session today. So let's start quickly. I hope all of you have 2 of you confirmed, 3 of you confirmed. I hope all of you have installed Microsoft Azure Explorer. If not, I have shared the link, or you can come here and you can download it from here. Once you click here, come here, either Windows, Mac, Linux, whatever you have, you can install it from here. Once you install, then how to use it. So I explained it to you guys that how can you use it, how can you use the storage account. So one of the ways is you can come here directly if you have access. Did you guys try accessing this storage account? If you have your laptop, or could you quickly go and try accessing this storage account? I mean, people who are part of my subscription only, they will be able to see this. People who are part of this Tsoft solutions, they will be able to see this. Go ahead, click on this and see what do you see exactly. Are you able to see it and post that? Are you able to do anything in that? So if not, if you're not able to do anything, how will you do that? And this is for you because you have access, you can see the portal. I have been telling this from yesterday that if I want to give access to someone, let's say someone from database team, someone from some auditing team, I just want him to access this data and go away. Nothing else. He or she should not be a part of my subscription. They should not be able to see my portal, nothing else. Then how to what approach should be taken? So you can sorry. So you can ask them to install the software Azure Storage Explorer. This is only when they want to do the manual intervention, guys. Okay, this is only when जब किसी को कोई manually data access करना है. If it is via REST APIs वगैरह, तब आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती. Then how to do it? That is a separate thing. We'll cover that as well. जैसा मैं जो कल एग्जांपल दे रहा था कि suppose you are that big company जिसने बहुत सारे equipment इंस्टॉल कर रखे हैं वेदर के लिए, और आपका पूरा का पूरा वेदर का डेटा उन इक्विपमेंट से कहीं पर यहाँ पर आके डंप होता है. एंड नाउ यू वांट टू गिव एक्सेस टू पीपल जिनकी छोटी छोटी सी वेबसाइट्स है, राइट? बट दे आर नॉट गोइंग टू लॉग इन मैन्युअली.
मैन्युअली लॉग इन करके आपके इसमें नहीं चेक करने वाले, दे आर फेचिंग दैट डेटा थ्रू एपीआईज, राइट? तब भी आप लोगों को देन इसकी जरूरत नहीं होगी, then you will not require this, then you will not require this. So this is only required when someone is going to access your data manually. Is it clear, guys? Yes. Let me open this. If you guys have it, please open it, and then we are starting now how to access one storage. And now I'm talking about, look at this, always we are talking about storage account. When I'll be talking about a container, that would be a different thing, and you will see that we are talking about a specific container, and you will see here that we are talking about a specific container. I can give you access to one specific container, I can do that. बस एक किसी specific container का access देना है मुझको, I can do that. I do not want to share any other data from my storage account. Okay. Let me download an image and I'll upload that image, and we'll see how can we though we have already done that, right? With a text file and with an image, I guess we have already done that, but let's see, we'll try it again. So if I upload something here and I want you to access only this particular file and nothing else, I can do that as well. But using access key, you are sharing your complete storage account. Okay. So now to access this is the link. Not able to access. Clear? Just because you have the link doesn't mean you can access. Let me share that link with you and see if you guys are able to see it or access it. I've shared it. Let me know if any one of you were able to access this. I'm not able to access. Same here. Right. Why? Because we have not shared it yet. So now we will do the sharing, but we'll come back to this कि एक single file किस तरह से share करनी है. We'll come back to that. इसका access वगैरह किस तरह से देना. We'll come back to that. First, we have to check. I'm not even sure if we will be able to do it today itself, or maybe we'll have to do this in next session. But today we have to complete this one कि आपको पूरे storage account का access देना है. Then how to do it. Because if I give you access to this one, सिर्फ इतने चीज का access देता हूँ, so then you will be able to access only this file. You will not be able to upload anything. You will not be able to download anything other than this file. यहाँ से आप लोग कर सकते हो. See, I have kept it private. Takes time थोड़ा सा. Can you guys try the same link now? Yes, it is simple. Yes. But now what have I done here? I have given you access to one particular file. I mean, instead of this, if it was a notepad, it would have worked. If you want, I can try, show it to you quickly. Give me a minute. I'll just quickly open a notepad. Okay, I have uploaded this notepad.
Now, if I share the link with you guys, do you think you will be able to access this? If I'm sharing this link with you, do you think you will be able to access it? Do you realize there's a different link for this one, which I shared with you, and there's a different link for this, which I'm sharing with you. But do you think you will be able to access this? Yes, guys. Yes, no, why? No, What is the logic behind it? Why not? I'm not able to recall, but in last session you explained. Public access not given. Okay, let's see. I'm sharing it with you. Fine. Your logic is correct. I mean, the answer is, let's say, are you guys able to access this? First, tell me that. Yes. Yes. Yeah. Let me open an incognito window and I'll see if I am able to access this. Obviously, I'll be able to access this here, and you can even edit this. Now, this is not a suitable tool to edit this, but you can edit this if you have a proper tool. Okay. So why were you able to access this? I did not share it. While sharing this, other than this, your logic is correct, because I did not explain it to you, hence you did not know the answer. If I would have shared only this file, that does not mean कि ये file अपने आप share हो जाएगी. But what I did while changing this access level, if you check, if I would have selected blob, तब सिर्फ उतना एक file share होता था. But what did I do here? मैंने पूरा container share कर दिया है. Now whatever I create under this container, वो share होता रहेगा. Which is the container? What is the container's name I have? This is the container. This is the container. While sharing this file, I had an option that I could share only this file. Private है मतलब कोई share कोई देख ही नहीं सकता है, unless portal का आपको access है, खुद आके देख रहे हो, that is a different thing, which was a default setting. अगर मैं सिर्फ blob पे करता हूँ तो सिर्फ इतनी फाइल शेयर होगी, ठीक है, only that file. उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. But while sharing, what did I do? I shared the container, complete container. तो अब इस container में मैं कुछ भी बनाऊंगा और उसका the moment you get your link, you will be able to access this. Is it clear? Yes, guys. Anyone who did not understand this? Yes. Anyone who did not understand, please let me know. And now I have moved it to archive folder, to the archive type. Do you remember we read archive type? And can you go back and try to access the same file picture I'm talking about? The first link which I have shared, this is a text file and this is a picture. Can you see the chat window? Can you guys see the chat window on sharing screen? I guess it doesn't appear. Guys, are you able to hear me? No, we cannot see the chat window. Okay. So the first link I'm talking about, JPG link. Can you click on that and try to access that? The one which you were able to access earlier. It's working. Is it? Yep. It should not. Yes, it's working. Try It's working. copying it and pasting it in a different browser. Okay. That is just the cache image you guys are seeing. Maybe try I think the it's because we are incognito. refreshing. Yes. Do not refresh. Try in incognito window, incognito mode. That not able to in Firefox. Yes. So why is it not working now? I did not make any changes in access level. क्योंकि आर्काइव पे we can't access until हम उसको change नहीं करते हैं, convert नहीं Exactly. करते हैं. Exactly, guys. What did I do? I changed the tier to archive. So now if I want to access this, I'll have to click here and again change tier to either cool or hot depending on my requirement. And what this process is called? Rehydrate. It is already Yeah. here. And then I told you that there are two steps or two categories. One is standard, one is high. What is the limit for high? 10 GB, I think. 10 GB, right? If it is 10 GB, rehydration थोड़ा सा quickly हो जाता है. Is it clear? I'll cancel this.
Anyone who did not understand till here? What did I cover here? I covered sharing वाला part, कि आपको एक ब्लॉब कैसे शेयर करना है. ब्लॉब मतलब एक फोल्डर आप समझ लो, या एक फाइल समझ लो, ठीक है, एक फाइल. और एक कंटेनर पूरा कैसे शेयर करना है. व्हाट इज अ कंटेनर? कंटेनर इज डेफिनेटली अ ड्राइव और अ फोल्डर. जिस भी तरह से आपको समझना है, इसका कोई सेट डेफिनेशन नहीं है. मैं इसको ड्राइव एंड फोल्डर फाइल इस तरह से समझ लो, या फोल्डर एंड फाइल, however you like it. But if I'm selecting this, selecting blob, blobs within the container can be read by this anonymous request, but the container data is not available. It clearly says कि अगर मैं इसको करता हूं तो सिर्फ ये accessible होगा. The moment I select container, complete container, तो container का पूरा data ये हो जाएगा. But उसमें भी the moment I change some access tier to some file, to some blob, to archive, तो वो access बंद हो जाएगा. क्यों? Because archive वाली चीजें accessible नहीं है. To access them, you will have to change. Image is opening, still working. Is it still working for you, Hente? Should not. Try some different browser. So is it clear to everyone? Anyone who did not understand? First, I'm covering the basic options. जो इंटरव्यू में भी पूछेंगे और जो डे टू डे आपके काम में आने वाले हैं. Once we are thoroughly done with that, once you are comfortable with that, then I will cover all these options. What is this version, snapshot, लीज क्या होता है, एक्वायर लीज क्या होगा, ब्रेक लीज क्या होगा. दिस आई कवर. ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन वाली कैटेगरी में है. बट द वन विच वी आर कवरिंग नाउ, ये डेफिनेटली पूछा जाता है. अगर स्टोरेज का टॉपिक आ गया, देन यू विल बी आस्क्ड, डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड. Just like we can use as a shared drive or shared file. Yes, this is a shared, Um, not in a literal way. We'll come to the shared drive also, but हाँ, थोड़ा बहुत वैसा ही कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप. क्या लिंक वगैरह शेयर कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है इसमें, बट यस, इन अ वे. एंड ऑथेंटिकेशन मेथड कितने हैं ये भी पूछ सकते हैं. वन इज द एक्सेस की, विच वी आर गोइंग टू ट्राई नाउ. एक्सेस की एक हम देखने वाले हैं, बिकॉज नाउ यू आर नॉट एक्सेसिंग द स्टोरेज अकाउंट. अंडरस्टैंड गाइस, आप लोग स्टोरेज अकाउंट एक्सेस नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट एक्सेसिंग ब्लॉब और कंटेनर फाइल वगैरह, ये एक्सेस कर रहे हो. स्टोरेज के जो है, कंटेनर्स के या स्टोरेज के ऑथेंटिकेशन मोड्स क्या है. एक तो है एक्सेस की और दूसरा है Azure एक्टिव डायरेक्टरी. Azure एक्टिव डायरेक्टरी इज नथिंग कि आप लोगों को जो है I'll have to see about that error. वैसे भी हम उसको नहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं. And if you want to see, then we can go ahead and check that once. We are focusing on access key. So Azure Active Directory पे क्या है? You will have to click on Azure Active Directory. You will have to create a user group, a security group वगैरह आप लोगों को create करना पड़ेगा. And then वहां पर accesses share करने होंगे कि Azure Active Directory में मेरे अगर इतने members हैं, let me open it for you. Just because I say Azure Active Directory, that does not mean कि Azure Active Directory के सारे लोगों को या सारे users को ये मिल जाना चाहिए. That is not the case. So Azure Active Directory में मेरे इतने सारे users हैं. I do not want all of them to use my storage account. See, a number of users, कितने सारे users हैं. I do not want all of them to use. So what can I do here? I can come here and I can create a group. जैसे यहाँ पर मैंने कुछ groups बना रखे already. You will see it. These are the groups I have created. बिलिंग वाला ग्रुप है कि इसमें सिर्फ बिलिंग का एक्सेस देना है. कोई टीम लीड्स का एक ग्रुप बनाया है मैंने कि इसमें सारे टीम लीड्स हो गए, जो वट एवर स्पेशल एक्सेस आई हैव गिवन टू टीम लीड्स वो उनको मिलेगा. उस तरह से आप एक एक्सेस बना सकते हो, एक सिक्योरिटी ग्रुप आप लोग बना सकते हो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को उस स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस होगा. हाउ टू डू दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट हियर. अगर बहुत सेशंस में टाइम बचता है हमारे पास फ्यूचर में, तो हम लोग करेंगे. अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि Azure एक्टिव डायरेक्टरी की एक अलग टीम होती है हमेशा. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर Azure. ऑन प्रीमाइसेस में भी जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टीम एक अलग होगा और एक्टिव डायरेक्टरी की एक टीम ही अलग होगी. जितना भी आइडेंटिफिकेशन का और IAM का जितना भी पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा ये जो है एक एक्टिव डायरेक्टरी की अलग टीम होती है. तो ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले. उसकी हायरिंग भी अलग होती है. एवरीथिंग इज डिफरेंट. And those people will not know much about your
कॉन्सेप्ट्स आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड यू विल नॉट नो इसके बारे में। तो वो एक अलग से डिफरेंट से टीम होती है। so, ज्यादा अगर कोई पूछता भी तो यू कैन से कि वो काम तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी टीम का था। सो यू डोंट हैव टू नो दिस, बट इतना पता होना चाहिए कि देयर इज अ वे कि जहां पर मैंने कोई ऐसा स्टोरेज अकाउंट बनाया कि बाहर से कोई एक्सेस करने ही नहीं वाला है। सो व्हाई शुड आई गेट इनटू दिस एक्सेस की वगैरह सब कुछ, मेरे जितने यूजर्स हैं बस उतने ही लोग एक्सेस करने वाले हैं। देन आई विल गो विद अज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। देन मैं किसी अज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी वाले को एक टास्क असाइन कर दूंगा कि दीस आर द नंबर ऑफ यूजर्स, आई वांट ओनली देम टू यूज दिस। मुझको एक ग्रुप वगैरह बनाकर दे दो, एंड आई विल कम हियर, यहाँ पर आई विल ऐड दैट ग्रुप। बहुत इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि Azure Active Directory टीम करता तो यू कैन नॉट डू इट। इट्स वेरी सिंपल, यू विल हैव टू कम हियर एंड ऐड एज एन ओनर। मे बी आप 2-3 ग्रुप बनाना चाहते हो, कोई ओनर और कोई, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मेंबर यू विल हैव टू सर्च दैट ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए इफ आई वांट दिस ग्रुप, इस ग्रुप को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, तो बचे हुए सारे मेंबर्स को मैं Azure Active Directory में आके इस ग्रुप का पार्ट बना दूंगा। Is it clear, guys? Or was it too much? Is it confusing? Anyone who did not understand, ping me, message me, tell me something you want me to repeat it. वैसे आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाला है इसके ऊपर, स्टिल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक देन यू शुड नो। अमित क्लियर? इसाक भाई, जूही, इमरान भाई, सृष्टि? Yeah, it's Yes. Yeah. Let's move Okay. forward. So this is what container is. Post container we have file share. This is exactly like a shared folder. Shared folder जो आपके ऑफिसेस वगैरह में होता है, शेयर फोल्डर जो जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं या फिर आपके सॉफ्टवेयर रखे होंगे, वॉट एवर इट इज। अ शेयर फोल्डर मीन्स समथिंग विच इज नॉट होस्टेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर, कहीं और होस्ट कर रहा है, बट बिकॉज यू यूज इट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा आप उसको यूज करते हो, इसलिए आपको एक वो टेम्परेरी सा ये बनाकर दे देता है, एक ड्राइव बनाकर दे देता है। सो यू कैन save your file, edit them, delete them, whatever you want to do, you can do it. वो इस तरह से दिखता है। Let me open this one. So, is it the same as in S3 WS? S3 bucket, you're talking about AWS? Yes. Is it the same concept for here as well? स्टोरेज अकाउंट, यस इमरान भाई, लेकिन S3 एग्जैक्टली फाइल शेयर जैसा काम नहीं करता है। S3 जो है अच्छा, वो अपना ये जो लार्जर स्केल पे स्टोरेज अकाउंट है उस तरह से समझ लो। जी। बट एग्जैक्टली जो अब हम इसका देख रहे हैं ना, फाइल शेयर वाला क्या करता है, वैसा काम नहीं करेगा S3। अच्छा। उसके लिए आई थिंक Azure AWS में ग्लेशियर एक है, आई थिंक एग्जैक्टली मुझको श्योर नहीं है, बट एक ग्लेशियर है उसमें, इलास्टिक फाइल सिस्टम है, मे बी दैट वर्क्स। कौन सा वाला करता है आपको देखना पड़ेगा वो। अगर इफ यू वांट आई कैन शेयर सम आर्टिकल या मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, बट AWS का उतना अच्छे से याद नहीं रहता मुझको, बिकॉज उस पर बहुत ज्यादा काम करता नहीं हूँ मैं। बट यस डेफिनेटली देयर इज देयर, बट S3 नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा। S3 इज डेफिनेटली नॉट देयर। S3 आपका जो ये स्टोरेज वाला स्टोरेज अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है Azure में, उसको आप कंपेयर कर सकते हो S3 से। अच्छा। कुछ हाँ, नहीं, Amazon सॉरी, सिंपल स्टोरेज। आप जो कंटेनर पहले बताए थे, फाइल कंटेनर, सो हाँ वो कंटेनर, सिमिलरिटी राइट, कंटेनर को बोल सकते हो आप, कंटेनर को एग्जैक्टली उससे कंपेयर किया जा सकता है। इट इज Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस S3, इसलिए होता है वो। Okay, so when it comes to when it comes to file share, guys, I'll explain it to you how it works. I think we have already done that. आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे करके भी देखा था। If you want, we can still do it. यहाँ पर मैं एक ये बनाता हूँ, स्टोरेज फाइल शेयर बनता है, एंड आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइस। मतलब मैं अगेन कोई एक्सेस नहीं देना चाहता, पोर्टल पे कुछ नहीं देना चाहता, उसके बाद भी आई वांट यू टू हैव दिस। तो इस तरह से आपके इस पे दिखता है। इफ यू सी, ये मेरा गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव, इसको मैं कहीं ब्राउजर पे भी खोल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट बिकॉज आई एम यूजिंग इट इतना फ्रिक्वेंटली, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई गो टू ब्राउजर, बार बार मैं ब्राउजर पे जाऊँ या बार बार मैं उसका पाथ याद रखूँ, उस पाथ को मैं रन कमांड में चलाऊं एंड देन ओपन करूँ। व्हाई शुड आई डू दैट? इससे बेटर ये नहीं होगा कि यार आप मुझको उसको एक ड्राइव के जैसा ही प्रेजेंट करो। जिसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, NF ड्राइव, ये मेरे लोकल डिस्क है, लैपटॉप से जुड़ा हुआ डिस्क है। तो अगर मेरा लैपटॉप चोरी हो जाता है, पानी में गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है, आग वगैरह कुछ भी लग जाए, तो दिस डेटा
is gone unless कुछ ऐसा मेरा है कि मेरा हार्ड डिस्क बच गया तो that is a different thing. कोई हैमर लग गया, किसी भी तरह से कुछ भी लोकल लैपटॉप को कुछ हो गया तो ये सारा डेटा मेरा चला जाएगा अगर मेरी हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज हो गई है तो. दिस लुक्स लाइक अ ड्राइव, ये ड्राइव की जैसा ही दिख रहा है, बट इससे मेरे लैपटॉप का कोई लेना देना नहीं है. अगर मेरा लैपटॉप टूट जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, यहाँ आई सिंपली हैव टू चेंज माय पासवर्ड. मैं गूगल ड्राइव पे आके पासवर्ड चेंज करता हूँ, यहाँ पर डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो जाएगा. और मुझको पता है कि चोरी नहीं हुआ है, किसी के हाथ नहीं लगा है, मेरे सामने ही लैपटॉप है, स्विमिंग पूल में गिर गया है. ठीक है, आई नो कि डेटा का मिसयूज नहीं होगा, बट आई नो उस लैपटॉप पे मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगा. आई सिंपली गेट अ न्यू लैपटॉप और वहां पर मैं यूज कर आई लॉग इन विद द सेम पासवर्ड एंड आई विल हैव माय डेटा इंटैक्ट. और वहां पर भी मुझको वो इस तरह से ड्राइव जैसा ही दिखेगा, इस तरह से ड्राइव, और जहाँ पे सारे मेरे फोल्डर्स एंड फाइल एंड एवरीथिंग ये सब आप लोगों को दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट अ शेयर ड्राइव इज. इज इट क्लियर गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर शेयर ड्राइव का? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि Azure का शेयर ड्राइव किस तरह से दिखता है. नहीं, not on Android and iOS. You can mount it on Windows and Linux, Windows, Linux and Mac. Lower case is always required guys. Here we have hot, cool and transaction optimized. एक मैंने वहां पर छोड़ा था, if you remember, OneNote में हम लोगों ने छोड़ा था. We'll still do it later. इसको बाद में हम देखते हैं कि transaction optimized क्या है. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट वो ज्यादा ये है नहीं, important है नहीं, इसलिए I'm leaving that as of now. 10 GB का मैंने ये बना लिया, and here I have some files, let's say. And now I want to share this file with you guys. और यहाँ पर मे भी कोई डेक है, कोई पीपीटी है, something is there, कुछ इस तरह से कोई चीज है which I want you guys to access. बहुत frequently access करते रहना पड़ेगा आप लोगों को, और उसमें एडिशन वगैरह बहुत कुछ करना है. Let's say there is a PPT, 30-35 पेजेस का एक PPT है जहाँ पर we all are working, right? इस तरह से कुछ है. सो आई डू नॉट वांट यू कि बार बार आप लोग जाकर कोई लिंक पेस्ट करो, ये करो एंड देन उसके बाद एक्सेस करो. दैट शुड नॉट हैपन. उससे आपका प्रोडक्टिविटी वगैरह काफी कम हो जाएगा कि हाफ ऑफ द टाइम आप लोग इसी में ये करते रहोगे, राइट? दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग गाइस, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, विल वेट. So file share we were talking about. I just have to use this. Linux, Mac. This we have already done this. If you guys want to try it, you can try it. नहीं करना है तो भी that is fine. I think we have already done this, right? इसको भी ट्राई करना है, कर सकते हो. ऑफिस पीसी पे कोई बैठा है so it might not work. क्योंकि 445 पोर्ट काफी हद तक बंद होता है. Someone who has Mac, they can try this, and if you have already done that, that's okay. You can leave it. But this is how you can
share this is how you can do it, और उसके बाद वो कुछ नहीं, बस एक ड्राइव जैसा दिखेगा and they will be able to access it और read वगैरह सब कुछ कर सकते हैं उसमें. Clear guys? Anyone has any doubt? Yes guys, anyone? किसी को नहीं समझ में आया? Let me know. Can we control the write access? No, you cannot. मतलब ये शेयर कर रहे हो, आप शेयर फोल्डर बना रहे हो ना, तो दैट इज फाइन, उसी तरह से आप ये कर रहे हो. ठीक है. देन क्यू क्या है? ये MS एक्सचेंज वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट O365 इन सब में काम में आता है. सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस. मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स वगैरह उस चीज में काम में आता है. सो वी आर नॉट रीडिंग इट एट ऑल. टेबल्स क्या है? विल सी दिस इन नेक्स्ट सेशन. वी हैव हार्डली 8 minutes लेफ्ट, तो टेबल्स को हम बाद में देखते हैं. वैसे छोटा सा टॉपिक है टेबल भी. ज्यादा टाइम हम लोगों का इसी में जाने वाला है. फाइल शेयर इज डन, इतना ही है फाइल शेयर का काम. क्यों वी आर नॉट डिस्कसिंग. टेबल विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. कंटेनर में भी हमारा और टाइम स्पेंड होगा, बट बिफोर दैट लेट्स try accessing the storage account. So portal वगैरह ये सब एक तरीका है. The another way is access key. So I will have to share my storage account name. This is my storage account name, and I will have to share my key. This is the key. So people who have storage account name and key. And guys, I was telling you कि APIs वगैरह जब आप लोग use करते हो, then that time you require connection string. So this is the connection string. That time you require storage account name and connection string. तो वो लोगों को Storage Explorer की इस तरह से जरूरत नहीं होती है. So now people who have already installed this, see if you are able to add this, or if one of you could share your screen, that would be helpful. Click on this one, or I'll guide. Click on this one. And is anyone doing? If I can get a confirmation, then I'll guide. Yes, I'm doing. So click here. I'm sharing my screen also. Okay. Yeah, share it. I think you'll have to stop your share. No, multiple is allowed. Okay, I'll still share. Stop by sharing. Fine. Can you share now? You can see. Yes. Cancel this, Kumel. Cancel this. Okay. Can you maximize the tool so they can see it properly? Refresh it again and show it from कहाँ से जा रहे हो ना, एक step by step बताओ. Okay. So how did you get this? I directly logged in. Right. Oh, yeah, okay. Let me just. No, are you logged into your Storage Explorer using your ID? No. Right. No. Let's say that you do not have access to my portal at all. You're just an external auditor. I do not want to share any access with you. I don't know why it's taking time. Maybe when I share screen, it becomes very slow. Office PC? Yeah, Office PC. They want you to work on office issues. No, not for personal learning. देखो कोई कंप्लेन ना कर दे आपके टीएल को. कोई है ही नहीं ना अपने कंपनी से भी. Watch out, Kumel. See, you got a warning. Okay, guys. So this is how it will look. Yeah, it's taking so much time. Okay. So click on that plug वाला जो बटन दिख रहा है सेटिंग के ऊपर. Seriously, it's that slow. Okay. Okay. Now, if you have access to subscription, directly you can click on subscription and you can log in. Okay. That is how I have logged in, but we are not looking at that because we do not want to give access to block container. We'll see this later next वाले session में जब भी देखना है. File share को भी access करना, how to do this. क्यों हम नहीं देखेंगे. Table will see.
This is something new. I'll have to check this. और देखूंगा इसको मैं हम लोग local के स्कोप में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. As of now we are checking कि complete storage account किस तरह से connect करना है. So click on this. See, now it is saying the connection string key or SAS, shared access signature which is SAS. So we will see this connection string. अभी just मैंने बताया आप लोगों को. SAS क्या है? We have seen it already, but इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं. As of now we have account name and key. So click on next. Display name you can give whatever you want. आप लोगों के हिसाब से जैसे भी आपको याद रहेगा. That name you can give, or maybe you can ask client to give that name. Right. The account name has to be the exact name. Kumail, can you copy it, please? And account key. Azure China, US government, these we are not using obviously, so it's all Azure. Use HTTP or HTTPS. So check on HTTP also. It is not recommended, secure नहीं होता है, but practice के लिए हम दोनों भी ले लेंगे. Okay. Click on next. Connect. And refresh once it is connected. वो refresh का ऊपर हाँ. And now if you I think it's still expand thinking. storage Should I account, close it? huh? It's connected, I guess, right? Yeah, it's connected, I guess. Close this one, and now the name. Can you see the name? The name which you had given. यहाँ पे storage Yeah. नाम नहीं बता रहा guys. One thing to here it will show the name which you have given. जो actual में मेरे storage का नाम है वो यहाँ पर नहीं बता रहा है, right? Okay, can you expand it now? So here you will see my containers. Here you will see my file share, everything, because I have given you access to my storage, and that too through access key. So you will be able to delete, you will be able to edit something. You can do whatever you want. You are as good as an owner here. Let that load. Some issue with my net, or I don't know. It's connected for you, Henty. Good. Anyone else who tried? Anyone else trying? Yeah. I did. Is Yes, it working? even I did. Can you click on Yeah, I blob can see container? test. Blob Nothing container? in blob. नहीं है ना, blob में Yeah. कुछ बनाया है ना हम लोगों ने. नहीं दिख रहा Error कुछ भी. details. There's nothing. Yeah, there's nothing. In blob we don't have anything. No. Nope. File. See. Anyways, You file can try queue and creating table. one. Create one, and let's see if Kumail creates one. Is Juhi able to see that? Okay. Lowercase without Well, any space. I'm getting an error like Henty is getting. Henty, what is the error, or what is your error? You cannot resolve this issue Yeah. on your own. Yeah, I failed to connect. The account being Okay, accessed this does not account support does not it. support HTTP. Fine. That's right. So how much time do we have? That's okay, Kumail, I you think can 1 stop minute. sharing. Yes, please stop sharing it. Okay. So now you guys see how to connect it, right? Now we Yes. do not have sufficient time, and as I told you, we'll take only one session today. At least you know how to connect it. You guys can create your own storage account, try connecting it. And if you're getting that error, please send the screenshot, and I'll let you know what is missing there. Send a screenshot in WhatsApp group, and I'll let you know कि वहाँ पर क्या missing है, and then you can try connecting it again.